हेलो एंड वेलकम टू यदन्या इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकाशी एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया लिमिटेड के कंपनी के बारे में। बेसिकली इनका आईपीओ आ रहा है, तो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग लेके कंपनी करती क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करेंगे, इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे कि ग्रोइंग कितना साइज है इंडस्ट्री का, एंड आखिर में वैल्यूएशंस के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इनके आईपीओ डिटेल्स के बारे में पहले बात करते हैं। तो ओवरऑल जो टोटल इशू साइज है दैट इज रफली INR 500 crores एंड टोटल इशू इज एंटायरली मतलब फ्रेश इशू है, ऑफर फॉर सेल कुछ नहीं, मतलब शेयर होल्डर कुछ बेच नहीं रहे स्टेक ना। ये फ्रेश इशू के प्रोसीड्स जो है वो कहाँ पे यूटिलाइज होंगे। सो एक इंडिकेटिवली फंड यूटिलाइजेशन का जो टेबल है, इफ यू कैन सी, सो रफली 111 crores will be utilized in funding their capital expenditure in opening new stores and warehouses, then funding incremental working capital, इसमें 220 crores एक major chunk ये spend होगा, then repaying their existing debt roughly 55 crores and balance will be utilized for general corporate purposes. So आगे हम बात करेंगे कि ये मेजर चंक इनको वर्किंग कैपिटल के लिए क्यों चाहिए, इसके कुछ रीजंस हैं। देन आगे बढ़ते हैं तो प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप होल्डिंग। सो करेंटली प्री इशू 100% इज 100% ऑफ द शेयर होल्डिंग्स इज विद द प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप। पोस्ट इशू ये प्रोमोटर ग्रुप के पास हो जाएगा होल्डिंग रफली 77.96%। प्राइस बैंड अगर आप देखो तो इट इज रफली 56 to 59 पर शेयर, फेस वैल्यू इज 10 पर शेयर। करंटली जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है एट द टाइम व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, इट इज रफली 30 पर शेयर। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, सो प्रोमोटर विच इंक्लूड्स पवन कुमार बजाज एंड करण बजाज, तो इनके पास प्री इशू करेंटली इनके पास 99.98% का होल्डिंग है, जो कि पोस्ट इशू हो जाएगा 77.96 एंड पब्लिक विल बी होल्डिंग 22.03%। कंपनी के बारे में बात करते हैं, सो ओवरऑल कंपनी का ओवरव्यू। ओरिजिनली ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी इन नेम ऑफ मेसर्स बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स इन 1980 in Hyderabad, and later on it got converted into public limited company in 2018. Then it is fourth largest consumer durable and electronics retailer in India as of FY21, and prominently इनका जो presence है that is into South, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में। देन कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है दैट इंक्लूड्स अ मिक्स ऑफ लीज एंड ओनरशिप। सो मतलब एज ऑफ 31 अगस्त कंपनी के जो 11 like 112 जो stores है across 36 cities, so out of that 11 are owned and 93 are leased and remaining 8 are partly owned and partly leased. सो कंपनी एक मॉडल फॉलो करती है जहाँ पे पार्ट ऑफ द स्टोर्स आर ओन्ड एंड पार्ट ऑफ द स्टोर्स आर लीज्ड। सो एक लीज रेंटल मॉडल भी है एंड ओनरशिप मॉडल भी फॉलो करती है कंपनी। देन अगर हम बात करें तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, सो लार्ज अप्लायंसेस बेचती है कंपनी। सो दे आर मोस्टली काइंड ऑफ अ रिटेलर, they buy outrightly from OEMs, that is original equipment manufacturers, and they sell it to the end consumers through their retail stores. Then इसमें product portfolio consists of large appliances, then mobile and small appliances and others. लार्ज अप्लायंसेस में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो एयर कंडीशनर्स हो गया, जो टेलीविजन है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर्स है, so this is all included. Then overall offerings का जो basket है, product offerings that consist of more than 6,000 SKUs. SKUs means stock keeping units, and more than 70 consumer durable and electronic brands, right? Then company का जो market reach है, they have been steadily increasing the market reach. Recently they have also entered into NCR region. Apart from that, company follow करती है cluster based approach of expansion. So cluster based approach as in एक region में आप हो, वहीं पे grow करो, expand in that region well, generate internal cash flows, use those cash flows to build other stores, right? Enter into other regions. So this is a overall overview of the company. बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करें तो इनके 3 चैनल्स हैं, मोस्टली रिटेल, होलसेल एंड ई कॉमर्स।
सो रिटेल में 100 MBOs है कंपनी के पास एंड 12 EBOs है. Out of those 100 EBOs, out of those 100 MBOs, 89 are under the name of Bajaj Electronics, mostly in the Andhra Pradesh and Telangana region, and 8 are in the name of Electronics Mart in NCR region. 2 are under the name of Kitchen Stories, which primarily cater to the kitchen appliances demand. Okay. Then for one specialized EBO is the name of Audio and Beyond, that mostly caters to the demand of accessories, जो audio home audio solutions जो होते हैं. Apart from that, रिटेल जो इनका जो चैनल है दैट कंट्रीब्यूट्स मोर देन 90% ऑफ देयर ओवरऑल रेवेन्यूज. आगे हम फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे. देन होलसेल चैनल जो है, सो कंपनी होलसेल में क्या करती है कि दे बाय आउटराइटली फ्रॉम OEMs and they sell it to single shop retailers primarily in Andhra Pradesh and Telangana. Then e-commerce में भी कंपनी ने currently मतलब हाल ही में एंटर किया in 2017 just to diversify their channel portfolio, and they have also partnered with Paytm and Amazon in the e-commerce space, in expanding their business reach from brick and mortar to e-commerce platforms. आगे अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो लार्ज अप्लायंसेस में है कंपनी मोबाइल्स भी बेचती है एंड स्मॉल अप्लायंसेस लाइक एक्सेसरीज भी बेचती है. सो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लार्ज अप्लायंसेस में कंसिस्ट होते हैं रेफ्रिजरेटर्स एंड टेलीविजन्स, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन एंड ब्रांड्स अगर आप देखो तो दीज आर वेल नोन ब्रांड्स लाइक LG, पैनासोनिक, फिलिप्स हो गया, सोनी है. देन मोबाइल फोन्स की कैटेगरी अगर आप देखो तो मोबाइल फोन्स is one of their fastest growing category. Then product portfolios include वो बेचते हैं टैबलेट्स बेचते हैं, स्मार्ट वॉचेस है, मोबाइल फोन्स है. ब्रांड्स इंक्लूड OnePlus, Oppo, etc. Then small appliances you can see, जो किचन appliances होते हैं वो है. Then other accessories such as Bluetooth speakers, etc. Then brands here are also, the brands are well known, Dell हो गया, Sony हो गया, right? जोग्राफिकल प्रेजेंस की अगर हम बात करें, सो जोग्राफिकल प्रेजेंस रिटेल स्टोर्स से जो जोग्राफिकल प्रेजेंस है दैट इज मोस्टली इनटू तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ NCR रीजन. एंड ऑनलाइन प्रेजेंस जो है कंपनी का दैट इज मोस्टली इनटू कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड हरियाणा. इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं. सो ओवरऑल इंडस्ट्री, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडस्ट्री का जो साइज है दैट इज INR 3 to 3.2 ट्रिलियन, right? And a major chunk of this industry is mobile phones and PCs, which is roughly 63 to 65%. And अगर आप देखो तो FY17 to FY20 में ये इंडस्ट्री ग्रो करी है फ्रॉम 12%, प्राइमरली बिकॉज ऑफ हाई डिस्पोजेबल इनकम हो गया, पेनिट्रेशन भी लो है, companies are widening their product portfolios, which also acts as a because consumers always want to upgrade their like products. So वो एक फैक्टर ड्राइव किया है. देन कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री डिपेंड करती है प्राइमरली ऑन द डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स बाय द कंज्यूमर्स एंड एज कंपेयर टू व्हाट द एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड एंड मेडिसिन हो गया. सो बट वर्क फ्रॉम होम में हाल ही में लाइक वर्क फ्रॉम होम में इसको थोड़ा बूस्ट मिला था बिकॉज जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, देन वर्क फ्रॉम होम के लिए जो प्रोडक्ट्स लेके लगते हैं, एक्सेसरीज लगते हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा ग्रोथ मिला है इस इंडस्ट्री को, लाइक मोबाइल्स हो गया, लैपटॉप्स हो गया. देन होम एंटरटेनमेंट के लिए भी जो लाइक लॉकडाउन था तो होम एंटरटेनमेंट के लिए जो एक्सेसरीज चाहिए, जो अप्लायंसेस चाहिए, वो उसका भी डिमांड लगभग एक पुश था उस डिमांड के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट इन FY23 दिस इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 13 to 15% ऑन द नॉर्मल बेस ऑफ FY22. एंड अगर आप देखो तो ओवरऑल ये जो इंडस्ट्री है तो फ्रॉम FY22 to FY27 इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 10 to 12% का CAGR एंड रीच 5.3 ट्रिलियन रुपीस. देन ओवरऑल जो कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट है सेगमेंट, सो सेगमेंट वाइज ग्रोथ क्या हम बात करेंगे. सो लार्ज हाउस होल्ड अप्लायंसेस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 8 to 10% CAGR. Then mobile phone PC is expected to grow in by low double digit. Then other small appliances is expected to grow by 6 to 8% CAGR. And why? Because अगर आप penetration देखो, like the table below, अगर आप penetration देखोगे इंडिया में तो that is very very low, right, as compared to the other developed and developing nations.
In addition to this, obviously like disposable incomes grow हो रहे हैं, then premiumization का trend है, like consumers always want to upgrade their products, premium products की तरफ ज़्यादा shift होता है, then companies new products हमेशा launch करती रहती है, new SKUs launch करती रहती है, then more urbanization. Then in addition to this, जो rural electrification जो हुआ है, that is also expected to like give a push to the demand for consumer durables. Then increasing number of channels such as e-commerce है, omni channel जो strategy companies follow कर रही है, that is also expected to boost demand for the overall industry. Then multiple financing के जो options होते हैं, right? So like 0% interest finance हो गया, then that has actually acted as a major growth driver for consumer durables industry in the past few years. Then moving ahead, अगर आप mobile phones के अगर हम growth की बात करें तो that is 12% projected from FY22 to FY27, and PCs की अगर हम बात करें तो less than 6% का growth is expected. Not only this, but जो unorganized to organized का जो shift हो रहा है, that is also expected to act as a what do you call it, as a growth driver, right? So if you see FY22 में 55% का जो share है as a part of this overall consumer durables industry, that is organized, that is expected to grow to 70%. That will also act as a tailwind. Apart from that, अगर हम financial statements की अगर हम बात करें, so financial statements में 17.1% CAGR से revenue का growth है from FY20 to FY22. Then EBITDA and PAT में PAT का growth is relatively very low, मतलब low as compared to the revenue, primarily because उनके margins impact हुए. If you see gross profit margins, that have been declined from 14.8% to 13.7%. एंड दैट इज प्राइमरली बिकॉज जो लॉकडाउन में इन्वेंटरीज पाइल अप हुई थी, उसको कंपनी को एक डिस्काउंट देके बेचना पड़ा, सो दैट हैज लेड टू डिक्लाइन इन द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स. मूविंग अहेड, अगर हम कुछ मिक्स की बात करें, रेवेन्यू मिक्स बाय चैनल, सो रेवेन्यू मिक्स बाय चैनल में आप देख सकते हो कि 97% ऑफ द रेवेन्यू comes from retail channel, and that has grown by 16.8% in the last 2 years. Apart from that, जो largest segment है by product category, that is large appliances, which contributes to roughly 50% as of FY22, and that has grown by 10%. So fastest growing segment is their small appliances, which has grown by 45% odd. एंड कंपनी का प्रेजेंस, सो रेवेन्यू कंपनी को मोस्टली दो रीजन से आता है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, दो दे हैव बीन लाइक दे आर एक्सपेंडिंग इनटू अदर रीजन्स लाइक एनसीआर. देन अगर हम फ्री कैश फ्लो की अगर हम बात करें, सो दैट इज आल्सो शोइंग एन इंप्रूविंग ट्रेंड. सो एज ऑफ FY22 61 करोड़ का फ्री कैश फ्लो कंपनी ने क्लॉक किया है. देन आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस में कंपनी इज एडिंग मोर EBOs, MBOs, स्टोर्स ऐड कर रही है कंपनी. देन अगर अब बिल कट्स की अगर भी हम बात करें तो दैट इज आल्सो ग्रोइंग, कितने बिल कट्स हो रहे हैं. देन रेवेन्यू पर बिल कट इज आल्सो ऑन इंक्रीजिंग ट्रेंड. सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हैज टर्न पॉजिटिव इन FY22, 23% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है. Now apart from this, अगर आप inventory days, debtors days and payable days देखो, तो payable days is roughly 1 or 2 days, right? Now why this is because they buy it outrightly from their मतलब जो vendors होते हैं, original equipment manufacturers, and जो payment terms है, that is either cash on delivery or in advance, right? So इसकी वजह से उनके payable days are low. बट अगर आप इन्वेंटरी डेज एंड डेटर डेज को टोटल कर लो, सो दैट कम्स टू रफली 70 days. सो यू कैन एनालाइज इट दिस वे दैट जो उनका इन्वेंटरी लेने के बाद जो कैश कन्वर्जन, मतलब जब कैश आती है उनको, दैट टेक्स रफली 70 days फॉर देम. बट उनको पे तो करना है रफली 1 or 2 days में, इमीडिएट पेमेंट बेसिस पे. सो जो मनी रिक्वायरमेंट होती है, दैट कम्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. So they need a high amount of working capital, and that is why they have a higher, I believe that is why they have a higher allocation of 220 crores out of total 500 crores of capital which they are raising. And this is also a reason why उनका जो debt to equity का जो ratio है, that is on a higher note, though that is shown some declining trend. ये overall एक peer comparison है. So if you see, company is a regional player, primarily into south,
Then company के operating profit margins are above average. So operating profit margins are roughly 6.4% as compared to 4% of मतलब average जो है. अगर हम overall valuations की अगर हम बात करें, so valuations are in the range of 20 to 22x. Now, how these are very indicative valuations. So pre-issue currently जो company के total number of shares है those are 30 crores. एंड अगर हम लोअर प्राइस बैंड को भी अगर कंसिडर करें, सो द प्री मनी वैल्यूएशन, प्री इशू वैल्यूएशन कम्स आउट टू बी 1600 करोड़, roughly 1700 करोड़. उसमें अगर आप फ्रेश इशू ऐड कर दो, सो पोस्ट मनी का जो वैल्यूएशन होगा, सो दैट विल बी रफली 2100 करोड़, 2200 करोड़. So this is how the overall एक indicative price band जो आ रहा है in terms of price to earning ratio comes to 20 to 22x as compared to आदित्य विजन, जिनका जो एक peer है कंपनी के, इनका PE ratio is roughly 33x, right? But the catch here is कि अगर आप GMP भी ऐड करो, तो लिस्ट होने के बाद जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे कंपनी ट्रेड होगी, सो अगर अब GMP जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी चल रहा है, सो वो ऐड कर दो, सो इवेंचुअली दैट रेशियो आल्सो कम्स आउट टू बी रफली 30x, राइट? So this was it. So overall, this was the overall analysis of the company. So I hope you love this video. ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए. You can सब्सक्राइब टू अवर चैनल. इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.